सर आपका माइक बंद है अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो। एक मिनट अब आ रहा है ऑडिबल? हेलो? यस सर। यस सर। ओके, फाइन। चलिए ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ जो मैं बात कह रहा था. सो टुडे वी आर गोइंग टू find out, or today we are going to focus on the drawbacks in the existing file processing system. That's why we are switching on the database management system. क्योंकि कल ये क्वेश्चन था कि हमारे पास ऑलरेडी डेटा को स्टोर करने के लिए फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है, हम एक फाइल बना सकते हैं जिसको परमानेंट स्टोरेज पे सेव कर सकते हैं. ठीक है. The biggest challenge was in that कि if you want to add some records, if you want to retrieve records from that particular file, you need application program. If there are different type of the constraints, okay, then you have to write a specific application program to handle a specific task. You need different application programs to add the data in the to add the records in that particular file. So in context to that, today we will discuss about some broad categories or in a broader sense कि हमें क्या लगता है कि यार ये वास्तव में these are some lacks in the existing file processing system and we need to improve it. तो जब हम improvisation के लिए जाने लगे तो हमें लगा कि ठीक है, we are building a new system that is a database management system. ठीक है. तो the first very important point is data redundancy and inconsistency. So what do we mean by the data redundancy and inconsistency? So let take one example. जैसे कि अगर मैं बात करूं, you are in this university, okay, so your data is required, means your name, your registration number, your address, your email ID, your contact number, this data is required. So first we will identify, okay, which departments need your data. Okay, so I say, okay, CC department need your data. Okay, even in CC department, if you are not managing a single file, for example, even in the CC department, different actors, I'm calling actors, the or entities which are dealing with this data. जैसे कि अभी मैं आपका सब्जेक्ट टीचर हूँ, so I need your data, I'm dealing with your data to update the marks and etc. हो सकता है सीसी ऑफिस में आपका डेटा हो, दे आर डीलिंग विद योर डेटा फॉर सम एकेडमिक पर्पस. ओके, तो मैंने कह दिया ठीक है, दिस डेटा इज विद द सब्जेक्ट टीचर, दिस डेटा इज विद द ऑफिस, दिस डेटा इज विद योर मेंटर, as well as this data is with your class coordinator. So this is only about the department. Just try to understand, other than this department, your data is required by the DSW, your data is required in academic office, your data is required in account sections, account office, जहाँ पे आपका पूरा ठीक है जो भी आपने फी वगैरह अपडेट करी. अब फाइल सिस्टम में क्या हो रहा है कि what we are doing, I am using a separate file, I am creating a separate file, office creating a separate file, mentor is creating a separate file, CC is creating a separate file. So क्या हो रहा है कि each and every department is having its own copy of the file. Okay, so देखो redundancy का मतलब क्या होता है? The higher storage and access cost. Why higher storage and the access cost? Because you are repeating your data. You are repeatedly storing that data. आप एक जगह डेटा को स्टोर करके और वहां से पूरा काम कर सकते थे. But what you are doing, you are keeping a separate copy of the data with each and every department. So unnecessarily you are repeating your data. अब ठीक है, रिपीटिशन हो रहा है डेटा का, तो कोई कहेगा सर डेटा अवेलेबिलिटी इज वेरी हाई. Data availability is high. Okay, this is the first benefit which we are seeing here, but it generates an error. It generates a problem. ये एक प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है. वहां पे डेटा अवेलेबिलिटी तो है आपके पास, बट ये एक प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, यू अपडेटेड योर कॉन्टेक्ट नंबर. For example, you updated your contact number, you informed your class coordinator, you informed your mentor, but you didn't inform anywhere else. कहीं और आपने inform नहीं किया. So the copy of the data no longer agree नहीं करती है वो. My copy is stating something else because there is a different contact number, और आपका coordinator और mentor के साथ जो data होगा वो different होगा. तो देखिए यहाँ पे एक एग्री नहीं हुआ डेटा के बीच में. So this is called as a inconsistency, means your data is not consistent. Consistent means
If you say that if it was in a correct state before the execution, then it must be in the correct state after the execution. So it means data must agree. डेटा मस्ट एग्री. जैसे हमने कल बात किया था, हमने एक एग्जांपल लिया था. फॉर एग्जांपल देयर इज अकाउंट ए एंड देयर इज अकाउंट बी. You are transferring, let's suppose 1000 is here and 1000 in the account B. You are transferring just 100 from A to B. So before the execution, this is 1000 plus 1000, this is 2000. And after the execution, it is 900 plus 1100, this is again 2000. So it means data agrees here. डेटा एग्री हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. यू आर गेटिंग द कंसिस्टेंट कॉपी ऑफ द डेटा. सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट व्हेन यू वर्क विद द फाइल सिस्टम, file processing system, data redundancy and the inconsistency is a problem. Okay, so once you are working on this part, the second important point which we have discussed, जो हमने कल भी बात करी थी, कि you need some separate necessary application programs to fulfill the specific request. So you have to write it. अभी हो सकता है फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक डेटा बनाया, जैसे मैंने कल भी बात करी थी, आपने एक कस्टमर का डेटाबेस बनाया. देयर इज अ कस्टमर आईडी, देयर इज अ कस्टमर सिटी, ओके, देयर इज अ कस्टमर स्टेट, ओके, एंड देयर इज अ कस्टमर, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं उसका एनुअल इनकम, व्हाटएवर. व्हेन दिस डेटा स्टोरेज वाज क्रिएटेड, ठीक है, जब आप फाइल प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं, आपने कहा ठीक है, आई वांट टू स्टोर दिस डेटा, आई एम यूजिंग अ फाइल, मैंने ये डेटा स्टोर कर लिया. नाउ आई वांट टू रिट्राइव द डेटा. तो हो सकता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द रिक्वायरमेंट वाज ओनली टू रिट्राइव द होल डेटा. मींस यू वांट टू जस्ट टेक द प्रिंट आउट ऑफ ऑल द नेम्स ऑफ द कस्टमर आईडीज, कस्टमर स्टेट्स एंड द एनुअल इनकम. बट आफ्टर अ वाइल मैनेजर, एक नया मैनेजर आ गया, ठीक है ना, he is your boss. Now he is very analytical person. He says, okay, don't do this, just give me the data of the customers who are resident of Jaipur, so a new requirement has born. तो अब आपको क्या करना होगा, you will write a new application program for it, because now you are applying a constraint here that whenever you will fetch the data, whenever you will retrieve the data, the constraint is what? City name must be equals to Jaipur. City क्या name, customer city क्या होना चाहिए? Jaipur होना चाहिए. So you have to write a program for it. After that, ठीक है, आपने एक नया प्रोग्राम बना दिया. After few days, he is also interested कि ठीक है यार, आपने मुझे you provided me the data of the customers who are living in the Jaipur, but now I am putting one more constraint here because I want to analyze the data to get or to gain the profit, है ना. तो वो कह रहा है कि ठीक है, just target the people who are the resident, who are living in the Jaipur and has the annual income more than 10 lakhs, because I have some specific products which I want to sell, but the targeted group of the people are those who have earning 10 lakhs more than 10 lakhs per year, क्योंकि वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं. So again there is a new requirement, so you have to write a specific application program for that. So it becomes cumbersome as the system evolve. हमने कल database management system में भी पढ़ा था that DBMS provide the maintaining of the database over a long period of the time. You have to just write a single query, you need not to write the specific programs for that and etc. like that. So it is not, it do not allow needed data to be retrieved in a convenient and efficient manner. So this is the second important point. Then this is the data isolation. This data isolation is coming from our previous example. जैसे मैंने कहा था, your data is scattered. कहाँ scattered है? Your data is with me, your data is with your class coordinator, your data is with your mentor, your data is with academic section, your data is with account office. So आपका जो data है वो scattered हो गया in various files. ठीक है. Now it may be possible that I am using a different format of the file. Your mentor is using a different file format. Your CC is using a different file format. Other departments are using a different file format. So the initial challenge is when you will write an application program, if you want to apply that application program, you want to say, okay, I have developed it, you can use it. So the first requirement is that file format must be same. Is it clear or not? So it becomes very difficult.
it becomes very difficult. And one important thing, as I told you, that I have updated somewhere my data but it was not updated at other positions. So वो भी कहाँ लीड करके ले जाएगा आपको इनकंसिस्टेंसी की तरफ. So ये जो डेटा स्कैटर्ड हो रहा है ना, दिस इज अ प्रॉब्लम. दिस इज अ प्रॉब्लम. इसको हमें सॉल्व करना है. ठीक है. The next is the integrity problem. Now, do we mean by the integrity problem? So integrity means we are saying that constraints. Integrity means what? We are saying the constraints which we are applying on the database to maintain the consistency. क्योंकि हम ये नहीं कह सकते that before the execution it was in correct state, but after the execution, no, it is not in a correct state. It means whatever the data, whatever the mechanism you are going to use to store the data is not correct. Data तो आपका consistent होना चाहिए. So it means it must fulfill some constraints. तो हम उनको कह देते हैं the types of consistency constraints that must be satisfied by the data. ठीक है. अब जो अभी तक हमारा डिस्कशन हुआ उसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी कहा था कि ठीक है एक मैनेजर है उसने कंस्ट्रेंट चेंज कर रहा है वो. ठीक है. इवन आप ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रेंट टाइम टू टाइम भी इवॉल्व हो सकते हैं. ठीक है. जैसे डेटा स्टोरेज पे भी कंस्ट्रेंट्स अलग अलग हो सकते हैं जो टाइम टू टाइम इवॉल्व हो सकते हैं. ठीक है. जैसे कि मान लीजिए आपने इनिशियली अकाउंट के लिए एक डेटा बनाया. ठीक है. आपने इनिशियली अकाउंट के लिए एक डेटा बनाया. whenever you will open a new account number, this is account holder name and this is amount in the account. So आप कह रहे हैं okay, the minimum requirement to open an account is 1000 rupees. This is a constraint. This is a constraint. So you will check here whether the amount is 1000 or not. If he has submitted, if he has transferred, then okay, you are this record is eligible for insertion in this particular table. For example, account number 1, account number name is Ramesh. But if the amount is 0, this record is not eligible. You want to insert this one. Okay. By the time it may happen that you are just changing some other rules. For example, आपने यहाँ पे city भी ले रखा है. ठीक है. Now you have divided into zones. ठीक है. तो पहले आप पूरा डेटा सिटी के लिए स्टोर कर रहे हैं that okay, this is for the Jaipur. But now you are saying okay, we are just dealing with a particular zone. Or we are saying that okay, जो amount है वो amount हम उसको रिमूव कर रहे हैं. देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शंस. सो देखिए कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं ना, कंस्ट्रेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, एक कंस्ट्रेंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा. ठीक है ना. जस्ट लिसन मी वेरी केयरफुली बिकॉज दिस कंस्ट्रेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेनेवर यू से दैट ओके, इसी टेबल की बात कर लेते हैं, मैं एक सिंपल टेबल की बात कर लेते हैं. आपको सोचना है कि यार क्या बेटर रहेगा. मैंने एक कॉलम लिया अकाउंट नंबर, मैंने एक लिया अकाउंट होल्डर नेम और एक कॉलम मैंने लिया अमाउंट. ठीक है. मेरे टेबल में ये 3 कॉलम्स है. ठीक है गाइस. अब मुझे इसमें डेटा स्टोर करना है. भाई मैं डेटा को क्या कर रहा हूं, आई एम स्टोरिंग द डेटा so that I can retrieve the data in the future whenever it is required. Is it clear? तो अब आपको ये सोचना है कि यार when you will retrieve data, ठीक है, तो जब आप डेटा रिट्राइव करेंगे, मैं थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करवा रहा हूँ आपसे. ठीक है ना. सो आप ये सोचें कि डेटा पहले से स्टोर है. ठीक है. हम स्टोरेज टाइम पे अभी कोई कंस्ट्रेंट आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके देख रहे हैं कि डेटा मेरा ये स्टोर है जहाँ पे अकाउंट नंबर्स गिवन है, अकाउंट होल्डर नेम्स गिवन है और अमाउंट गिवन है. देयर इज अ टेबल जहाँ पे केवल 3 कॉलम्स है. ओके. नाउ आई वांट टू रिट्राइव डेटा. तो सर्चिंग के लिए रिट्राइवल का मतलब क्या है, इस डेटा स्टोरेज में से आप डेटा को सर्च करें एंड आफ्टर सर्चिंग व्हेन यू विल फाइंड द डेटा यू विल रिटर्न इट टू द योर प्रोग्राम. इज इट क्लियर? फाइन. तो अब आपको ये सोचना है कि यार कौन सा फील्ड है, कौन सा कॉलम है जहां से मैं डेटा को, जिसको मैं डेटा सर्च करने के लिए यूज ले सकता हूं. द कॉलम विच आई कैन यूज to search the data in the given data storage. This is the question. Okay. So the first thing which comes in the mind of many student, क्या ठीक है नेम से सर्च कर लेते हैं. just use the name for the searching कि मेरा डेटा सर्च करना है, so I will give my name like that Rohan Kumar. Just tell me the balance in the account of the Rohan Kumar. But there is a problem.
There's a problem because it may possible that there are number of users who have the same name Rohan Kumar. Are you getting my point or not? So now this is a key basically. When you apply a search on the given data storage, so whatever the value you are providing to search, that is called as a key. So this key is basically this key has duplicate values because there are number of Rohan. For example, there are 3 Rohans, so it means this key has 3 duplicate values. So which Rohan? किसका data देना है? किसका balance बताना है? I don't know. Okay. So we find okay, this is not appropriate. हम name से तो नहीं कर सकते simply. We can't do this. So what? Now we come to this column. Can we use account number? Can be account number. तो हम जब account number पे जाते हैं तो हम पूछते हैं okay, what are the rules for account numbers? First we ask what are the rules for the account numbers. So our client says that account number is a 16-digit number and it cannot be same for 2 customers. Oh, fine. Now it will work. What our customer is saying, account number is a 16-digit number and it cannot repeat for 2 customers. So it means this is the solution of our problem. If I will give account number that please give me the um, balance amount in the account number. For example, starting 13 digits are somewhere 160, 000, 40. Last 3 digits are 971. So this account number is unique. This account number is unique. So if I will provide unique, okay, so if I will provide this account number, I can easily retrieve the data from the database or from the file storage or the data storage, whatever. Simply say that from the data storage. The second important constraint which I need here, ठीक है, अब मुझे लगा कि ठीक है यार, this is fine, okay, the account number is there, it is a unique number, it can work as a key, I can provide, I can fetch data from that particular storage. Now the next question is it possible that a person can open an account without account number? My client says no. Now I'm on the right track. It means each and every data record must have a account number. The first important thing, each and every data record must have a particular account number. The second one, and this account number must be unique. So these are the constraints. So try to understand whenever we are just creating a table, like in the database management system, I just talked to you. So whenever we are storing the data, it does not mean creating a table only. ये मैंने कल भी कहा था, ठीक है? So there are different type of the constraints. Some implicit constraints, some explicit constraints. Implicit constraint means you will find okay which data item you will use as a key. It may possible you can change it after a while. अभी जैसे आप मान लीजिए आप इसके लिए अकाउंट नंबर लेके चल रहे हैं, it may possible there are some rules and the regulations imposed by the government and you are identifying each and every account by using the Aadhaar number. It may be possible after a while you are using PAN card as a value to store the data, manage the data and retrieve the data, because again that is a unique number. So implicit constraint that can be changed. Similarly there are explicit constraints जो मैंने कल भी एक बात करा था आपसे कि for example you are transferring amount, तो explicit constraint क्या हो सकता है? Before transferring amount you will check कि ये 1000 से कम तो नहीं जा रहा. If it goes down 1000 you will stop the transaction, you will not allow customer to complete the transactions. So when you work with this file system, so try to understand this is very difficult to change the programs to enforce the constraints which you are going to add manually. Okay, जिनको हम नया constraint जब आप add कर रहे हैं, it becomes very difficult to change the program. क्योंकि file system हम एक ही बात कर रहे हैं, every time we need to write the application program for the specific task. ठीक है, so this is the integrity problem. This is the integrity problem, means fulfilling the constraints by the data storage. The next one is the atomicity problem. What is atomicity means? This is again a property of your transactions, जिसमें हम कहते हैं acid properties, हम आगे discuss करेंगे. So transaction का meaning मैंने कल भी आपको बताया था. Transaction does not mean that you are just simply transferring amount from account A to account B.
पैसा ट्रांसफर करने का हम ट्रांजेक्शन नहीं कह रहे हैं. दिस इज अ टेक्निकल वर्ड विच इज यूज्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम एज अ ट्रांजेक्शन. But in the database management system, when we are talking about the transaction means a task to perform read and write. You are reading from a database and you are writing into the database, then that will be called as a transaction. Okay. Now the word is atomicity, means transaction must be atomic. Atomic means it must happen entirely. Please, this is very important. It must happen in its entirely or not at all. या तो वो पूरा होगा, कंप्लीट होगा, या तो वो प्रोसेस कंप्लीट होगा या बिल्कुल नहीं होगा. बिल्कुल नहीं होगा का मतलब क्या है? मैंने कल भी एक एग्जांपल लिया था दैट यू हैव टू अकाउंट्स. दिस इज 1000. द अमाउंट इन द अकाउंट बी इज 1000. यू आर जस्ट ट्रांसफरिंग 100 फ्रॉम ए टू बी. Okay, so this amount has been debited from the A. Now the amount in the A is 900, but it was not credited in B. So still there is 1000 in the B. ये 100 कहाँ गया? I don't know what happened because this is a digital transaction. System failure हो गया, कोई सॉफ्टवेयर में बग हो गया, whatever. तो ये 100 जो है वो यहाँ पे क्रेडिट नहीं हो पाया. So क्या ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाया? We read the data from A, we write the data on A, but we didn't complete this process. We didn't write the data on B. तो या तो होगा तो पूरा होगा या नहीं होगा. नहीं होगा का मतलब क्या है? We will roll back. Simply we will roll back. Roll back करके हम इसको क्या करेंगे? We will update it. We will add 100 here and make it 100. हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे उसको. Is it clear? So एटोमिसिटी जो है ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इंश्योर नहीं करता है. फाइल सिस्टम डज नॉट इंश्योर एटोमिसिटी. ये एटोमिसिटी इंश्योर नहीं करता है. सो डेफिनेटली यू कैन नॉट प्रोसीड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम बाय यूजिंग द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम. आप इसको यूज लेके उसके लिए नहीं जा सकते. वो ठीक है, पहले चलता था. देयर वाज सम मुंशीज हु मैनेज अ पर्टिकुलर बुक जहां पे आप कितना क्रेडिट हुआ कितना डेबिट हुआ बाई हैंड लिखते थे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? पहले होता था कि ठीक है, हर बिजनेस में एक आज भी होता है, वी पीपल मैनेज अ क्रेडिट बुक फॉर आवर सेल्फ पर्पस. बट राइट नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड. राइट नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज वी हैव अ डेटाबेस इन द बैक एंड. ओके, तो वहां पे क्रेडिट करते थे, डेबिट करते थे. यू वेंट देयर एंड यू सिंपली gave some amount to that Munshi, and Munshi was busy with some telephone conversation at that time and he forgot. He didn't update that. You have given it to him. ठीक है, अब वो कह रहा है ठीक है यार यहाँ पे तो एंट्री नहीं है, आई कांट डू एनीथिंग. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट टेक्नोलॉजी इज गिविंग अस. आई हैव ट्रांसफर्ड सम अमाउंट बट इफ इट वाज नॉट क्रेडिटेड इन दैट पर्टिकुलर, मतलब वहां से अगर कंफर्मेशन नहीं है देन इट विल बी क्रेडिटेड बैक इन माय अकाउंट. Getting so atomicity means transaction must be completed or not at all. ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने ठीक है बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लिया क्योंकि लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ यार घर पे भी कुछ क्रेडिट बुक्स रखते हैं हम. दोज आर फ्रॉम द बिजनेस फैमिलीज. वहाँ पे हम मेंटेन करते रहते हैं क्रेडिट कितना हुआ, डेबिट कितना हुआ. बट इट इज ईजियर टू मेंटेन बाय यूजिंग अ डेटाबेस. ठीक है, अगर आप आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेमेस्टर यू विल बी एबल टू डेवलप अ डेटाबेस. So you can simply use your computer system. Front end के लिए आप कोई भी language use ले लें for developing that particular and you can simply use that one, है ना. जैसा कि अभी तो हम टैली पे भी यूज ले रहे हैं. सो टैली ठीक है बट वो एक सिंपल एंड पे है. सिंपल एंड पे है. ठीक है. नाउ द कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज. सो कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज क्या है? देखिए, कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज को हमें समझना होगा. इसको थोड़ा सा मैं एक सिंपलर एग्जाम्पल से ट्राई करूंगा कि शायद आप समझ पाए कि कॉन्करेंट एक्सेस से प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि व्हेन वी आर वर्किंग विद द डेटा स्टोरेज. ठीक है, हमने डेटा को स्टोर कर रखा है. सो व्हाट इज द प्राइम फोकस फॉर स्टोरिंग दैट डेटा कि जब भी फ्यूचर में या करंट में इफ इट इज रिक्वायर्ड वी कैन रिट्राइव द डेटा एंड दैट डेटा इज करेक्ट.
क्योंकि हम कह रहे हैं that data is consistent, is in the consistent state, my system is in the consistent state, so whatever the record I am fetching from that particular record or from the database, that is correct. Is it clear? अब अगर हम बात करें जैसे आपके सिस्टम की सिंपल से हम बात करते हैं कि whenever a semester starts, you all are asked to register for that. You choose some subjects और फिर आप वहां पे क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं, ठीक है। फिर हम एक बैंकिंग का भी एग्जांपल लेंगे, पहले हम आप जो कर रहे हैं उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि कॉन्करेंट क्या कहना चाह रहे हैं। सो मान लीजिए स्टूडेंट ए जो है, ही इज अपडेटिंग, ही इज रजिस्टरिंग फॉर द कोर्स पर्टिकुलर इन द पर्टिकुलर सेमेस्टर. When he is updating or registering, at the same point of time, we know that it is possible that other students can register and update the courses. Yes, so it means हम वहां पे क्या अलाउ कर रहे हैं, we are allowing concurrent access. हम अलाउ कर रहे हैं कि ठीक है, आप एक टेबल है उसमें कॉन्करेंटली आप डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम कहते हैं कि व्हेन स्टूडेंट ए इज अपडेटिंग, स्टूडेंट बी इज नॉट अलाउड टू अपडेट और वर्क ऑन दैट. If we are putting such a constraint, then our idea is not successful. Because whenever we develop a system for the data storage, this is the first requirement. Okay, it is available for the hundreds of users, thousands of users at a time, they can use it. Okay, we cannot increase the waiting time and can decrease the throughput of the system. So we are allowing the concurrent access. There. So try to understand here. For example, okay, just moving on that. Let me take one more interesting example. ठीक है, चलिए एक एटॉमिसिटी का एक और एग्जांपल लेता हूँ, मुझे एक याद आ रहा है अभी, कंप्लीट और नॉट कंप्लीट वाला. पीपल यूज दिस प्रॉपर्टी ऑफ द डेटाबेस to hack a system very smartly. वहाँ पे क्या होता था कि जैसे ही आप ATM सिस्टम्स पे गए, आपने कार्ड लगाया, ठीक है, वो अमाउंट जो है वो आपका अमाउंट आ रहा था, दैट वाज अ केस व्हिच वाज रजिस्टर्ड एंड सम पीपल वर कॉट. नाउ द सिस्टम हैज इम्प्रूव्ड बट दे यूज दैट वन. आपने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, बिकॉज वो पैसा निकाला और फिर पैसा निकालने के बाद उन्होंने कुछ देर तक उस विंडो को होल्ड करके रखा तो सिस्टम ने प्री अज्यूम कर लिया कि ठीक है, द मनी जो है, मनी इज नॉट टेकन बाय द कस्टमर एंड इट हैज बीन टेकन बैक इनटू द वॉल्ट, and that machine shows that the transaction was incomplete. ठीक है, so when the transaction was incomplete, so it was rolled back and the same amount was credited back into the account holder. But those people were caught and the system has improved. Some new technique has been included in this one. So these are the things which happens with each and every technique. ऐसा नहीं है किसी को ये लगे कि यार डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे जा रहे हैं, एवरीथिंग इज वेल सिक्योर्ड. ठीक है, हर डेटाबेस सिस्टम्स भी अगर आप बात करें, दिस इज अ टेक्नोलॉजी, देयर आर सम लूपहोल्स वेयर द पीपल आर वर्किंग एंड जस्ट अटैकिंग द सिस्टम. जिसमें आपने एक नेम सुना होगा, जब आप एसक्यूएल पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे, देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज एसक्यूएल इंजेक्शन. दिस इज द पार्ट ऑफ योर क्रिप्टोग्राफी एंड द सिक्योरिटी सब्जेक्ट. बट फिर भी आप डेटाबेस पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यार कहाँ पे ये लूप्स हैं. सो व्हेन एवर यू विल वर्क एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, यू विल टेक केयर ऑफ दैट कि ठीक है, जब मैं कोई डेटाबेस बना रहा हूँ तो ये नहीं होना चाहिए. ठीक है, so when initially people started working on the database, they didn't apply validation on the text field. Front end पे text field पे validation ही apply करते थे. So the query of the SQL was treated as a simple text and it was executed by the system. और उससे क्या होता था, database hack हो जाता था आपका. Nowadays the database administrators are smart, they know SQL injection can be happen, so they are just putting or writing some validation codes on the text boxes. Okay, so before just feeding the instruction, they are validating the data. So the last one is the concurrent access anomalies. I know that I am just running out of the time. I have covered the security problems. Okay, just complete it one. This one we will take more example in our next lectures.
So the overall performance of the system and faster responses, many systems allow multiple users to update the data simultaneously. Okay, but when you are interacting with the systems concurrently, it may result into the inconsistent data. How does it happen? We will take one more example in our next lecture. Don't worry about it. And even we have a complete chapter on this concurrent access. Okay. So वहां पे हम देखेंगे कि जब concurrent access होता है तो हम किस तरीके से सिस्टम को consistent state में रखते हैं by applying some order dependent executions. Is it clear? So we have talked about the security system. Security system in the file system is not up to the mark. So we switched on the database management systems. Okay, we have time. It's 9:38 only. Okay, we have 7 minutes. So अभी तक जो मैंने बताया वो कितने लोगों को समझ में आया, पहले तो मुझे बताएं। कितने लोग हैं जो जग रहे हैं और कितने लोग हैं जो सो गए हैं, क्योंकि दिस इज ओनली अ थ्योरेटिकल पार्ट। अभी हम उस पे तो गए ही नहीं हैं। डेटाबेस इज रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट्स। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। कितने लोगों को समझ में आया? पहला ड्रॉबैक क्या है फाइल सिस्टम का? Sir, accessing data is a problem. एक्सेसिंग डेटा इज अ प्रॉब्लम। वो तो सबका ही निकल के आ रहा है लगभग। देखिए, एक तो ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। प्लीज कीप दीज 2 पॉइंट्स इन योर माइंड, डेटा रिडंडेंसी एंड द इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। दैट इज रिलेटेड विद द ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। आपने पहले अपने अकाउंट से 50 रुपीज डेबिट किया। हाउ मच रिमेनिंग? 950। देन आपने इसमें से 900 डेबिट किया। हाउ मच रिमेनिंग? दैट इज 50। ठीक है, बिकॉज यू आर वर्किंग इन ऑर्डर। आपने पहले भी सिस्टम्स पे जब स्टडी की होगी तो आपने देखा होगा कि अभी जैसे आपका अभी ऑपरेटिंग सिस्टम भी चल रहा है, तो आपको पता होगा व्हेन एवर अ प्रोसेस P1 and P2 both arrives or at a particular system, they compete for the resources. Okay, and we allow to use one and just kill the another one if it is not required. So if this thing happen here, then what will happen? You're just initiating a transaction of 50 and you are just initiating a transaction of the 900. If this one will succeed and this will not succeed, so you will get 950 out of your account, but it was only updated to 950, so you will get the benefit of 900. Okay, but if it will succeed, this will not complete, still you will get 950, but you will get a benefit of only 50 rupees here. The 100 rupees will remain in your account. Just see the technology, how does it work. So when you are dealing with a technology, you have to take care of each and every simple point.
कि जब आप दो ट्रांजेक्शन एक साथ कर रहे हैं, आपके अकाउंट पे दो ट्रांजेक्शन एक साथ हो रहे हैं, देन यू नीड टू बी एग्जीक्यूट इन सच अ वे और इन सच अ ऑर्डर दैट द फाइनल आउटपुट इज सेम. Whether you are executing first 50 then 900, or you are executing 900 and the 50, the final output is 50 only. You are just fetching the 950 out of your account. So this must be ensure the serializability of the instructions. Even if you see that, for example, there is a in which 1000 is there. Okay, you are reading this one, you are reading A, then you are writing 950 because we have taken 50 out of here, so I am just taking a 950. Then you are reading B, this is 1000, and then you are writing B, this is 1050 after the complete. अब मेरे ख्याल से इंस्ट्रक्शंस को समझ रहे होंगे. द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यू आर रीडिंग द अकाउंट ए, then you are writing the account A, you have taken 50 rupees, then you are reading account B, it contains 1000, then you are writing account B, that is 1050. The another one is, then you are reading B, and then you are just increasing it by 10%. Are you getting my point or not? So whenever you will apply this concurrent execution, so you can say that, okay, this is the transaction 1, let me call it transaction 1, and let me call it transaction 2. ठीक है. So अब आपके पास in the broader sense you have the transaction 1 and the transaction 2. Transaction 1 is updating your account A and account B, and transaction 2 is simply updating your account B. ठीक है. Now we are saying, okay, we can't say that these transactions cannot happen concurrently, because we want to increase the throughput of the system. Throughput of the system means we are allowing the multiple users, but there are two transactions. Just try to understand this concept. What do we want to say? There are two transactions, T1 and T2, okay, which we are allowing to use execute concurrently. ठीक है. अब मुझे ये बताइए कि सिस्टम करेक्ट आउटपुट कब देगा आपको. Either T1 is followed by T2 or T2 is followed by the T1. It says that when the T1 is executing, it is executing in the isolation. After that, T2 will execute. Then in this second example, we are saying that T2 is executing in isolation. After that, T1 is executing. We can't enforce. हम ये नहीं कह सकते, okay, T1 is executing, then we are not allowing the person who is executing the T2. It will decrease the throughput of our system. So we are allowing concurrent transactions. So our requirement is that we need to create a concurrent schedule of T1, of instructions of T1 and T2. Let me write it, of instructions of T1 and T2, such that either T1 is followed by T2 or T2 is followed by the T1. सिंपलर वर्ड्स में समझ लें आप कि हम इस तरीके से एग्जीक्यूशंस को बना रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस को मैप कर रहे हैं. वी हैव अ कंप्लीट चैप्टर ऑन दिस. We took more and more examples when we will cover this chapter, but for introduction, this is introductory class, so try to understand we are allowing concurrent executions, but we are allowing or we are scheduling the instructions in such a way that overall effect of that concurrent execution can be, or you can say that concurrent execution schedule can be directly mapped onto T1 followed by T2 or T2 followed by T1. Is it clear? अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो चलिए हम एक और सिंपल सा पॉइंट ले लेते हैं. मैंने कहा दिस इज ए, दिस इज बी. ए ने 50 रुपीज ट्रांसफर किया है, 50 रुपीज टू बी. देखिए यहां से समझ लें आप, ठीक है. और सेकंड हम क्या कह रहे थे, बी का जो अमाउंट है we will increase it by the 10%, so we will simply multiply it by the 0.1. Amount equals to amount plus
ठीक है, इसको 10% से इंक्रीज करना है। एक ये है आपके पास और एक ये है आपके पास, मीन्स 50 विल बी क्रेडिटेड इनटू द बी। अब देखिए आप ऑर्डर देखें आप, लेट्स सपोज द इनिशियल अमाउंट इन बी इज 1000। गाइस प्लीज है ना, थोड़ा सा आराम से सुने आप। अगर मैं T1 फॉलोड बाय T2 करता हूं तो आप समझे 1000 प्लस 50, दिस इज T1, द रिजल्टेंट अमाउंट इज 1050। ठीक है, इसका अब आप इसको T2 अप्लाई करेंगे। सो 1050 का 10% निकालें आप, कितना होगा? 105। just add it in the 1050, 105, the resultant amount is 5511, 1155. This is the final amount. उसमें क्या हो रहा है? The right of the T1 is first, then the right of T2. Now change the order. Listen me carefully. Now change the order. Change the order means what? First we will update it. Means first we are executing T2. So T2 we are executing T2. So 1000 का 10% कितना हो? Just find out कितना हो? 100 rupees. So it means if you will execute T2 first, what you will get here? 1100. Done. Then you are using T1. How much data कितना ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे? 50 rupees. So 1100 plus 50, what you get here? 1150. Now see the difference. 5 रुपए का difference आ गया यहाँ पे. It means you cannot change the order. You cannot change the order. So when you are applying, when you will see that, okay, there are two transactions, these are the rules for just changing the instructions to get a serial schedule which is equivalent to the given concurrent schedule. जो मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले कहा था कि we can map a concurrent schedule on the serial schedule. T1, either T1 followed by T2 or T2 followed by T1. So when I will apply this process, this is a simple constraint. Okay, if there are two write instructions back to back, if there is a order, if there is original order as T1W will be executed first, okay, means before the T2W. So I cannot interchange. If I will interchange, the result will change and my data will enter into an inconsistent state. Is it clear or not? So when you are applying concurrent access, okay, this will be handled by your database management system. You are a database administrator, you will write some programs to apply the constraints. After that DBMS will handle all, है ना? So transaction control कहते हैं इसको, transaction control mechanisms भी कहते हैं, that how we can get a serial schedule. So this is a very interesting example कि यार हमने, ठीक है, कई बार लगता है कि ठीक है यार, जब concurrent access हो रहा है, B को हम अपडेट कर रहे हैं, B को A भी अपडेट कर रहा है और B को बैंक भी अपडेट कर रहा है, these are two transactions. तो जब हम कॉन्करेंटली कर रहे हैं तो क्या क्या डिफरेंस आ जाएगा? अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो क्या डिफरेंस आ जाएगा? देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ गया, 5 रुपीज का डिफरेंस आ गया. सो दिस इज द केस. इज इट क्लियर? यस सर. समझ में आई? छोटी सी बात थी ये. निवेदिता एंड छवि, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? नो सर. नहीं, हैंड रेज कर रखा था. सो देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है. जब हम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, लॉजिक्स की बात करेंगे, तो ऑन पेपर हम फाइंड आउट कर लेंगे कि यार ये गलत हो रहा है. दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग इन दैट. ठीक है, इसलिए हम ईआर डायग्राम पहले बनाएंगे, रिलेशनल मॉडल पहले बनाएंगे. हम डायरेक्टली ऐसे बैठते नहीं कि चलिए डायरेक्टली टेबल्स बना लें और डायरेक्टली उस पर वर्कआउट करना स्टार्ट कर दें. फाइन. सो अब थोड़ा सा और बेसिक पोर्शन इसका बचा है, उसके बाद हम ईआर डायग्राम पे स्विच कर जाएंगे. सो आई नीड वन मोर लेक्चर टू कवर द बेसिक्स. ओके, देन वी विल स्टार्ट ईआर डायग्राम. ओके, सो गुड बाय. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर.